जाम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं विद न्यूयॉर्क्स फाइनेस्ट और ये प्रोग्राम उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो आइए इनसे और बातचीत करते हैं। I mean, it's affected almost everybody, I think, our new administration. Quite a few people have had negative reactions from people because they don't know us. तो आप लोग की job ऐसी है कि you're always with the public, you're always out there with your fellow officers as well as with the public. Have you had any negative, positive reactions? Especially after the new administration. You know what, I will go back a little before the new administration. जब ये शुरू हुआ था, अभी election campaign शुरू हुई थी, तो especially दो जो presidential candidate थे, उन्होंने काफ़ी जो है वो चीज़ें negativity लेके आए Muslim population की तरफ. So of course majority Pakistanis are Muslim, although we have other religion, people of other faith in Pakistan also. Right. तो बल्कि यहाँ पे भी we work very closely with them. तो उस वक्त we cannot appreciate enough to the commissioner at that time was Commissioner Braddon. Right. और जो न्यूयॉर्क सिटी का mayor de Blasio, they publicly came out and they really acknowledged the NYPD Muslim officers and Muslim officer society. Yes. Which brought a very positive outlook on Muslim community. Yes. And gave a moral uplift. Right. And we felt really good about it. Yes. Of course, we always feel good about ourselves because, you know, we know what we are. We know what our faith teaches us. We know what our religion is about, and it's all about peace. तो उसके बाद जब ये उन्होंने publicly आके denounce किया उस rhetoric को और उस negative propaganda को, so it was little ease and comfort in the community. But at the same time, I will not be shy to say कि जब वो negativity आई तो I have, because my wife, she wears hijab. And of course I have 4 kids and she has to drop them off to the school and pick them up from the school also. And when this thing was going on, automatically that thing brought a negative impact on Muslim community nationally in the United States. Hate crime जो है मुसलमानों के खिलाफ, they were on a rise, they're still on a rise. With their acknowledged from everywhere. तो उस वक्त मैंने अपने घर phone किया. I was at the job at that time. I called my wife. I told her, I said, you know what, I don't want to scare her off because, you know, our families, they should and they deserve to have a little better sense of protection. Correct. Because if we are the uniformed personnel, so उनका mindset ये है कि उनके ज़हन में ये है कि, you know what, when we're walking in the road, people know us. Like, you know, I'm a wife of captain, I'm a wife of lieutenant. Oh, you know what, my husband is a cop, I'm a cop myself. तो ये चीज़ें एक internal psychological effect होता है. Even कि, of course, people don't know my wife or her husband is a cop. Correct. लेकिन उनका एक होता है ना कि आपका एक self built in एक आपकी confidence होता है. But I had to remind her, I said, you know what, don't be like, you know, don't be afraid because I want to be careful what I say. Right. Lekin be concerned. Right. So when you are going out, be concerned. So that was then. Moving forward, you know what, of course, is the president is Donald Trump, like, you know what, and we are expecting all the better and better things. And we are hoping, like, you know, the positivity comes out and basically negativity goes away. Lekin ek cheez zarur hai ki, you know what, this time Muslim community is under stress. Correct. And they are, like, you know, under pressure also. But inshallah, you know what, we are here for each other. And a lot of other Americans, a good majority of Americans, they know Muslim and Islam is the faith of peace. Right. And like they see us on daily basis. Yeah. And even, like, you know, we are concerned, but there are good people around us, and they give us a good, like, you know, good feeling and good sense of protection. So Allah khair rakhe, inshallah, you know what, we're living in good place, we are living in good place, and inshallah it would be better. Like, you know, we are always optimistic. Right. आप तीनों से एक सवाल है कि let's say कि if somebody starts harassing somebody, what should they do really? See, main thing, before I even answer that, what he mentioned about hate crime and other incidents that happen, जो आपका जो question है, what they should do, one thing obviously call 911. Right. Call the police. Try to avoid the situation as much as possible. Right. The other important thing that हमारे जो community में नहीं इतना practice की जाती कि अगर कुछ होता है तो report करें.
मेन चीज यहाँ पे होती है जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे हमें पता नहीं लगेगा। तो इसका मतलब आपके 10 जैसे हरासमेंट हो या रॉबरीज हो या जो भी एक जगह पे हो रही हैं, लेकिन आपने रिपोर्ट 0 की है, तो इसका मतलब वहाँ पे 0 हो रही है, पता नहीं चलेगा, तो वो बंदा और करता रहेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, और करता रहेगा। सो मेन थिंग इज, एक तो हमें एक्शन लेने के लिए आपकी भी सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी की भी। तो like if you see something, say something, right? beautiful. Yeah. तो that means for anything, Yeah. you know, Yeah. कि अगर आपके हरासमेंट हो रही है, हेट क्राइम है, जो भी है, आपको नहीं श्योर, कॉल 911। Yeah. ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं हुआ तो नहीं रिपोर्ट लेंगे, एटलीस्ट रिकॉर्डेड हो जाएगी कि जब वो सिस्टम में एड्रेस में जो अब कंप्यूटराइज में सिस्टम है उसमें अब पता लग जाएगा यहाँ पे कॉल आई थी, किस चीज़ की कॉल आई थी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू कॉल, ताकि हम भी उसकी तरह हम रिएक्शन कर सकें, ताकि हम भी उस तरह हम इन्वेस्टिगेट सही तरह की जाए उस चीज़ को, और उसके साथ हम प्रिवेंशन के लिए भी प्रोग्राम सेटअप कर सकें इन जगहों के लिए। So that's a very good advice. Very good. Coming back to my other thing that I have in my mind, ये जो सड़कों पे हमें जो टिकट मिलते रहते हैं, हर वक्त उन्हें पुलिस की गाड़ी पीछे से आती रहती है कि जी आपने लेफ्ट टर्न सही नहीं किया, आपने मतलब जो कुछ भी उनको कहना है वो कहते हैं। सिद्रा, ये बताइए कि हम क्या करें, you know? सिद्रा, आप बताओ। I would say just do your best to follow the rules. Yeah, okay. Yeah, I mean don't be like, you know, try to be कोई और तरीका नहीं है बचने नहीं, but का? if you think you are right and that other person was wrong, You know, many a times Like- you think police is always right, though. I mean, they are human beings. Go ahead. Go ahead. we can send the ticket back and say not the thing guilty. is, we're human. We're not computers. Correct. Yeah. So I'm not saying 100% कि आप हर वक्त कोई गलती हो सकती है, हाँ। इसलिए कि शायद आपने कोई चीज पकड़ी हो, हाथ में बंदे को लगा, पुलिस वाले को लगा कि आपने फोन पकड़ा हुआ है या कोई चीज है, तो ऑब्वियसली थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं। तो मेन थिंग ये है, जब आपको कोई रोके, सबसे अच्छी बात यह है कि पोलाइटनेस। Be polite. इसलिए अब आप अगर डिफरेंस देखेंगे, स्पेशली पाकिस्तान से अगर आप नहीं आए या आपको यहाँ पे इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई, पाकिस्तान में हम जो अनफॉर्चुनेटली जो बहुत, मैं कहता हूँ कि बहुत ही बुरी चीज़ है कि हम पाकिस्तान में पुलिस वालों को मिसबिहेव तरीके से हम उनको ट्रीट करते हैं। Perception ही बहुत परसेप्शन ही बहुत है। हाँ। तो हम जब रोका जाता है तो हम राइट अवे उनसे ऊंची तरह बात करना चाहते हैं, लड़ने लगते हैं। लड़ने लगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो आपने बात की बिल्कुल सही की, एंड आई वुड सेकंड दैट। एक दफ़ा मुझे पुलिस ने रोका, रात को कोई मेरा ख्याल है 1 बजे का टाइम था। आई वाज ऑन Cross Island Parkway. So he came behind me, was in a private car, he came behind me, stopped me, I stopped him, and he says, "Where are you flying to?" And I said, "Home." You know what he said? He said, "Please be careful." And he allowed me to go, because he looked at me, he knew that I was telling him the truth. I was looking tired, I was coming from work, so he says, "Where are you flying to?" I said, "Home." इतना तेज जा रहे थे। That's why and you know, because of my honesty, you so know, that's where I was going with my point, is that when हम जो used to होते हैं ना पाकिस्तानी जैसे environment, यहाँ पे जितना आप polite बात करोगे, जितना honesty से बात करोगे, उतने ही आपको chances हैं कि वो आपको उसी तरह, first आपको उसी तरह ही respect करेगा, और दूसरा कि उसको understand होगा कि कोई गलती हो जाती है, वो आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तो उससे भी गलतियां हुई हैं, आपसे भी गलती हो सकती है। So आपका and then we chances have court system. We can Yeah. always plead not guilty and go to the court, and in front of judge we can give our version. और अगर बात नहीं बनती तो I know हम वो सबको usually कम शौक है कर कि भाई जल्दी पहुंचे, तेज ड्राइव करें, लेकिन बात यह है कि अगर आप वैसे ही देखें, स्टैटिस्टिकली देखे जाए, ज्यादा से ज्यादा 5 फर्क पड़ता है। लॉज को फॉलो तो करते स्पेशली आप यहाँ से 200-400 माइल थोड़ी जा रहे हो स्टेडी स्पीड पे, जहाँ पे थोड़ा सा फर्क सही कह रहे पड़े, हैं। लेकिन आप जब ट्रैफिक में रुकोगे, आगे सिग्नल में रुक जाओगे या कहीं होगा, तो मैक्सिमम आपको 5 मिनट का फर्क पड़ेगा। सही। तो वो आपका Better एक to तो be सेफ्टी, safe लाइफ than सेफ्टी sorry. के लिए, और दूसरा आपका मॉनेटरी भी आपके लिए सेफ्टी है। Right, right. Yeah. सही। The main thing is comply. That's basically it, the bottom line. You complying, the police officer not going to exceed. Yeah. He's going to do the investigation and do the right thing. Most of the time, I would say. हाँ। I hope कि और कोई आपके पास सवाल ना हो, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हाँ, लेकिन सवाल तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से सवाल यहाँ लिखे जो हमने भी पूछे ही नहीं। मुझे सिद्रा से पूछना था, हाँ, पूछो। being a female
officer with a husband and daughter. तो आप बताइए आप कैसा बैलेंस करते हैं आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जॉब? I'm sure you have to work different hours of. Actually, we have this. We have a schedule. There's a tour. It's called tours. So we have tours that I have to go. Mostly, I do the afternoon tours, which starts at 3 o'clock and goes all the way till 11. 11:30, 35. So you're like that. on 3 to 11 shift. 3 to 11 Oh my shift, which is gosh. called 4 buys in our अच्छा format. And I live with my mother-in-law, अच्छा my husband's family. जी जी. So basically, she takes care of my daughter हाँ when I'm चलो, at home. that's चलो, nice. you're Yeah, lucky. हाँ, Yeah, I'm very lucky, yeah. alhamdulillah. Even मेरी अम्मी भी होती हैं यहाँ पर, but she recently moved to New Jersey. अच्छा. लेकिन sometimes she stays with my mom. But most likely ये अपने दादी माँ के साथ होती है, which is my mother-in-law. So she takes care of my baby really well. तो खाना पकाना? खाना पकाना, yes, I do it. My husband loves food, so मैं सब कुछ बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ. माशाल्लाह. बट सिद्रा ने तो ये बताया, तो आप लोगों की भी तो ड्यूटीज मतलब सख्त होती हैं, और आपकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उनको टाइम चाहिए, बेगमात को टाइम चाहिए, तो हाउ डू यू एडजस्ट ऑल ऑफ दिस? अगर तो आप true, of course, not undermining Sidra. Have to. This is the disclosure. Right. अगर आप इस अदील भाई की वाइफ से मिलें या मेरी वाइफ से मिलें जी, तो आप हैरान होंगे कि first, now I'm gonna go back and I'm gonna take like few seconds कि मेरी यहाँ तक पहुँचने में सबसे जो बड़ा contribution है मेरी वाइफ का है. अच्छा. कि जब मैं यहाँ पे आया, I was the first one for my family who came into this country. I did all the odd jobs which you can name, working grocery store to working gas station to driving yellow cab and moving up this level, alhamdulillah. But when I was working, she was supporting me all entirely from my house side. तो मेरा काम इतना था कि जॉब पे जाना है और पढ़ना है. So I was working whatever I was working, and I was going to college. So I became police officer, and then I was in still college. So she was helping me. In a sense, she was taking care of every single thing of the household side. Grocery करनी, bill pay करने, बाहर के काम करने, laundry and everything. And my main focus was to just work, NYPD job, and go to college. Right. Jab once, inshallah, alhamdulillah, I finished my college. Right. Then it was job, or if I get overtime, Right. and I had to study for my promotional exams. Okay. और promotional exam ऐसे हैं कि as Sidra stated, they really take a breath out of your life. they're not easy. They're not easy. Yeah, They're very difficult. Yeah. Especially when you are working, like, 8 hours a day, then you have to do some of our overtime. और मतलब आपकी शिफ्ट बन जाती है 10 से 12 घंटे की कभी, फिर आप आके घर आप पढ़ना है, फिर अपने बच्चों को टाइम देना है. Very And tough. when I was studying for my lieutenant exam, I had 2 kids. Right. So I used to lock myself in a room. Yeah. And my children were like, they will knock on the door, and my wife is basically like holding them, like, she's taking care of every single thing. Right. And when I was studying for my captain exam, I had 4 kids. Wow. So, and she really, I give her a bit, like, a lot of credit, like, you know what? Yeah. Sometimes I say, you know what, if it was not her, probably, like, you know what, my probably marriage would be gone too. इतना time देना पड़ता है, और फिर I have to go back again, is lifestyle. Right. So एक दफा जब बन जाते हैं, पुलिस में चले जाते हैं, so they get used to also. Yeah. And now, like, sometime I work in the morning, like, sometime I work in the evenings, sometime I have to go in the night time, sometime I have to do double. Right. So, and she keeps up, like, good. And then, she had, like, good education. She's a CMA. She did the cost management accounting from Pakistan. Okay. And recently, like, she wants to go back and, like, she wants to do her things. Right. And she has started, like, on part-time as assistant teacher in New York City. Awesome. So this is how we try to balance everything. But you Spouse still have to take. support is very definitely. important. Very important. And then I think Adil will speak for himself. अदील, आपके अगले इम्तिहान की तैयारी हो रही? No, he's actually no. I'll say. Okay. Adil, जो है, he should be getting promoted to captain very soon. Okay. Inshallah. So he's just waiting. He's on the list. We passed the same exam. He's done everything. Yes. अच्छा, And चलो. you know what? Actually, we almost, like, started the same time. Like, Adil has like 6 months on me. Okay. But, like, we pretty much got promoted to lieutenant, like sergeant, lieutenant together. Like, and inshallah soon he's gonna be Pakistani captain. So we have 2 captains here. No, actually we have. You can say inshallah. We have On two the list captains. means he's there. And you can say pretty much. she should be our future captain too. Inshallah. So, Yeah. You'll be the first अदील, female captain. आपके सब खैरियत है, मतलब बैलेंस हो रहा नहीं, है? अल्लाह का शुक्र है. Obviously
यू नो जो क्रेडिट आप घर ही जाना चाहिए, इसलिए कि जब तक आपको घर की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं कोई ना, अगर आपको फिक्र होगी, टेंशन होगी या स्ट्रेस होगी घर की, तो आप बाहर का एक तो पहले अपना आप काम नहीं कर सकते, और दूसरा जो हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे वहीद का और मेरा जो है, जो हमारा काम ये है कम्युनिटी सर्विस करना। तो हमारे जितने जो हमारे एक तो ड्यूटीज आवर्स होते हैं, उसके बाद जो हमारे उतने ही जो कम्युनिटी सर्विस आवर्स होते हैं ना, यहाँ बैठे हैं बिल्कुल जितने उतने ही कम्युनिटी सर्विस आवर्स होते हैं ना, तो वो हम कभी नहीं कर सकते। और वो किसके लिए है? वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, करंट जनरेशन के लिए, कि हम उनके लिए कोई अच्छा सक्सेसफुल पैथ कर लें। तो ऑब्वियसली अगर घर से हमें होगी कि भाई हमें घर जाना है, कि भाई स्ट्रेस हो रही है, कि ये करना है वो करना है, तो हम अपने तो मदद नहीं कर सकते, तो किसी और की भी नहीं कर सकते। तो क्रेडिट बहुत ही ऑब्वियसली हमारी वाइफ्स पे जाता है, और बच्चों पे जो जिनके पास इतना पेशेंस है कि भी हम उनके लेस हर प्रोफेशन में ऐसे ही है। बिल्कुल। If you need to become successful, you need the support of your spouse. You definitely- Without that, it doesn't work. I just want to add that they're giving all theirs to their wives. I just want to say thanks to my husband. He's very supportive. Yeah, of Yes. course. After my Of course. parents, Must he's be. been there for me. Yes, yes. Just because of him, I became a police officer. Ah. Because Yeah. going through the academy with the child, my baby, she was 3 months when I joined the academy. Wow. Wow. So he was the one who was looking after her, because Ah. my mother-in-law, she does everything she can, but she's little age Right. old. Yeah. So Yeah. I just want to thank him. अब थोड़ा सा देखें, मैं ऐड करूंगा सिद्रा की बात। जी जी। Who can imagine in Pakistan a woman who has given a birth to a child Right. Yeah. It's just can join a police academy after 3 months? Wo nothing bhi else, not a especially work, in but New police, York. police and why? And then she And has to why? run every day, a mile and a half run, you Yes. know, Wow. and do Wow. everything else. You know, Wow. it is amazing. Wow. It is mashallah. amazing. ख़वातीन और हज़रात, अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, हमारे पास बेतहाशा और भी सवालात हैं जो हम इन तीनों से करना चाहते हैं। एंड दे आर सो अकोमोडेटिंग, सो इंटरेस्टिंग, दे हैव आंसर्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी आस्क्ड, एंड दे एलैबोरेटेड एवरीथिंग। इन्होंने तफसील से हमें जवाब दिए। हम इनका अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कैप्टन वहीद एंड टू बी कैप्टन अदील राना एंड पुलिस ऑफिसर सिद्रा सईद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी फिर आपसे बातचीत हमारी रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। And we are very proud of you, all three of you. Yes, we are. Alhamdulillah. अल्लाह हाफिज़ व नासिर। Salame Jahan.